So hello everyone. Today is a class for animal tissues. I hope आपने पिछले वाले वीडियोस हमारे देखी हैं जिसमें प्लांट टिश्यूज की बात कर रही है, डिस्क्रिप्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. तो अभी जो क्लास है हमारी एनिमल टिश्यूज स्टार्ट होती है, इट नॉट ऑफ चेंजेस, मतलब वो भी टिश्यूज है, ये भी टिश्यूज है, लेकिन दोनों में चेंजेस है. प्लांट्स की रिक्वायरमेंट और एनिमल्स की रिक्वायरमेंट सिमिलर नहीं है. दैट्स द रीजन कि प्लांट टिश्यूज अलग कैटेगरीज में आते हैं और एनिमल टिश्यूज की अलग कैटेगरीज हो जाती है. Animal tissues are of four types. चार तरह के होते हैं: epithelial, connective, muscular and neural tissue. अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी जो वर्ड ऑब्सोलेट हो गया है वो है nervous. अब जो वर्ड यूज होता है that is for neural, right? So what is the word which is used? It is about the neural. So Neural. You have to remember this. It is neural. तो यहाँ पर एक समरी सी दी हुई है जिसमें आपको सारे तरह के टिश्यूज होते हैं. कैसे दिखा रहा है कि स्टमक में जितने भी टिश्यूज हैं, जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज एक कंप्लीट ऑर्गन बनाते हैं. स्टमक इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गन. स्टमक इज एन ऑर्गन. अब ये जो स्टमक है आप देख सकते हो कितने डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज का बना हुआ है. इट इज स्मूथ मसल टिश्यू का बना हुआ है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज भी है फॉर पैकिंग, neural tissues there to ensure कि जो gastric juices वो timely release हो और shun हो जाए, right? Then it also has epithelial linings. Okay? So like this, it is a pack of several tissues working together to do a function of digestion, and thus it is becoming the next level of organization, organ system, organ, and then organs organize to form organ system. इस तरह से हमारे सभी systems develop होते हैं. टिश्यूज आते कहां से हैं? बेसिकली जो ओरिजिन है टिश्यूज का वो जर्म लेयर से मिलता है. सो व्हाट आर द जर्म लेयर्स? इस बारे में आपको बता देती हूँ. देयर आर व्हाट इज जर्म लेयर इज ऑल अबाउट. सो लेट्स डिस्कस इट. द जर्म लेयर्स क्या होते हैं? इट इज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट previous when you have studied in your junior classes about the sexual reproduction. So in the sexual reproduction, so what happens here in the sexual reproduction? There is a male gamete, spermatozoon, and there is a female gamete which is the egg, right? The spermatozoon and the egg is there. They fuse to form, so this is the sperm cell and this is the egg cell, and they fuse to form the zygote. Zygote इसके बाद mitotic division के through growth start कर देते हैं, right? Through the mitotic division, growth start कर देते हैं. So multiplying the growth, and thus it becomes multicellular. Very soon it becomes multicellular structure, and इस टाइम इसको हम embryo कहते हैं. Initially इसमें भी इसमें embryo कहा जाता है. जब इसमें थोड़ा सा feature develop हो जाता है, organs आ जाते हैं, तो इसको fetus बोलने लगते हैं. In the later stages of development. तो मल्टीसेलुलर जो है ये स्ट्रक्चर, अब ये अपने आप को अलाइन करते हैं. सेल्स बनते जाते हैं. There are lots of cells inside. ये बहुत compactly packed है. ठीक है. अब सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो what is going to happen? They are going to reorient themselves into a layers. तो क्या होता है? ये अपने आप को 3 लेयर्स में, अगर मैं ह्यूमंस की पर्टिकुलरली बात करूं, एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स की, तो ये अपने आप को 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है. तो 3 लेयर्स में ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड द आउटर वन द लेयर होती है. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, एंड दिस इज नोन एज एक्टोडर्म. दिस इज एक्टोडर्म. जो दूसरी वाली लेयर्स होती है ये होता है मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ये होता है एंडोडर्म, राइट? इस तरह से 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म. तो हर एक एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर सेल्स इज अ फेट. इस सब एक फेट छुपा होता है टिश्यूज का. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 3 जर्म लेयर्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक मॉडल कहते हैं, एंड इसके बाद हम देखते हैं कि क्या करता है ये जर्म लेयर्स. सो दीस 3 जर्म लेयर्स, इसमें से है एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म. सो एक्टो, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. इसमें जो एक्टोडर्म है वो हमारे पास वैसे 4 तरह के टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल, न्यूरल, मस्कुलर, कनेक्टिव.
इसमें जो एक्टोडर्म होता है, ectoderm is giving rise to epithelial tissues. Epithelial tissues तीनों germ layers की contributions है, कुछ में ये एंडोडर्म में भी है और किसी में मेसोडर्म ऑरिजिन भी रखता है epithelial tissues. ठीक है, सेकंड जो कैटेगरी होती है एक्टोडर्म का मतलब एंडो और मेसो में एपिथेलियल का कंट्रीब्यूशन है. इसके बाद आता है connective tissue. Connective tissue is particularly mesoderm in origin. Muscular tissue भी mesoderm in origin. फिर आता है neural tissue. Neural tissue is ectodermal in origin. ठीक है, so this is about the phage. कि किस तरह से germ layers embryonic cells है, they are forming the four vivid types of tissues. They are highly diversified and modified as per the life processes they have to maintain. So they are highly specialized tissues in animals pertaining to human beings, highly specialized and complex organisms in animal body, and that's how the organism becomes complex overall. The organism. तो तीन जर्नलिस्ट की बात की, अब हम टिश्यूज को एक करके पढ़ेंगे, उनके फीचर्स पढ़ेंगे, आपको ओरिजिन पता है. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स फीचर्स. तो फीचर्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जैसे यहाँ पे भी है सेम चीजें हैं, हमने यूज किया है कंटेंट. तो इस कंटेंट में मुझे काफी ठीक लगा इसका एक्सप्लेनेशन और यूजिंग इट और फॉर्मेशन एज वेल. यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे सारे वर्क करता है. लाइक अमीबा है तो अपने सारे लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, वो फूड वेक्यूल बना के इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रहा है, और न्यूक्लियस सारा कंट्रोल सेंटर है, वही पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है पूरे सेल को एज एन ऑर्गेनिज्म. रेस्पिरेशन भी हो रहा है थ्रू सिंपल बॉडी डिफ्यूजन, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी बने हुए फॉर दिस पर्पस ओनली फॉर एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, और रिप्रोड्यूस भी करेगा टू डॉटर अमीबे. ये अपने सारे लाइफ प्रोसेस एक ही ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट कर रहा है. सिमिलरली अब यही चीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स अगर करने जाए तो वो फिर द ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी डज नॉट एग्जिस्ट. तो डिवीजन ऑफ लेबर तो हमारा टिश्यूज से स्टार्ट हो ही जाता है. यहाँ हम देख रहे हैं कि टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform specific functions such as is called tissues. All complex animals consist of only four basic types of tissues. और मैंने आपको बता भी दिया, you can see that how it is going to the atoms and molecules used to form the the single cell, the cytoplasm पूरा तैयार होता है, फिर वो organ system से लेकर further वो कितने आगे तक जाते हैं. You can see here the level atoms to molecule, then macromolecules, organelles बनते हैं, cell बना रहे हैं, tissue, organ system and organisms. So like this it works. Then comes the अगर हम functions की origins की बात करें, so what is a function? So the four types. So on the basis of functions and structure, tissues are of four types. So types of tissues में है epithelium, connective, muscular, neural. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको neural tissues को particularly आपको फोकस करना होगा, तो आप इसमें देख सकते हैं. इसमें अगर आप न्यूरल टिश्यूज की बात करें, so epithelial tissues में covering, protection, diffusion, secretion and absorption. Connective tissues, it connects the structures, provides support to the body, transports substances in the body. Muscular, it is for contraction and relaxation of the body, helps in movement and locomotion. In the neural tissue, it is to generate and conduct impulses in the body. Right? So like this, we have the introduction of the tissues, and after that, we move to the next one. So here, the types of epithelial. इसके लिए हम दूसरा वाला कंटेंट यूज करेंगे, for the foundation. तो ये है introduction. Epithelial tissues की बात करें तो what are the features? So features of the epithelial tissues is like epithelial tissues forms a covering, lining of the hollow cavities, skin, external environments जो barrier create करना है. So that is epithelial tissues. So lining of all the organs. The cells of the epithelial tissues are tightly packed and form a continuous sheet. There is a small amount of cementing material between the cells and no intercellular spaces present in between them. Permeability of the epithelial tissue plays a great role in exchange of gases and material between the blood and the alveoli.
various organs, it also plays an important role in osmoregulation. All the epithelial tissues are separated by an underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. So what is that basement membrane? So like suppose this is the tissue lining and we have this kind of like ये है tissues है, तो इसमें basement membrane होगी नीचे की तरफ. So there is a basement membrane like this. ये एक duct है, it is acellular and it is secreted by the underlying connective tissues के नीचे से connective tissue होता है और ये जो कुछ cells हैं इन दोनों की contribution से basement membrane तैयार होता है, right? So it is like this. So it is extracellular fibrous basement membrane. ये सबसे unique feature है epithelial tissues के अंदर. Exception भी है इसके अंदर. जो urinary bladder, ureter और urethra में जो epithelial tissue lining है उसमें basement membrane absent है just to prevent उसमें यदि स्ट्रेचिंग चाहिए यूरिन ब्लैडर की फिलिंग चाहिए तो इसके उसके स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ाने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन को हटा रहा है, वो हटा दिया उसने, तो वहां पर वो चीज नहीं देखी जाती है एनाटॉमी के अंदर. So all the epithelial tissues are separated. So this is an exception is there. So बहुत सारे important features है. अब दूसरा है no intercellular space, बिल्कुल नहीं है इसके बीच में. And then it is of different types based on shapes like simple, cuboidal, columnar, stratified. ठीक है, जिसमें से सिंपल क्यूबॉइडल कॉलमनर शेप स्टेट हो रहा है लेकिन सिंगल है और स्ट्रैटिफाइड वाला जो है वो मल्टी लेयर है. नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम की. सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर, इसमें बताया, एंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स एन लाइनिंग्स. बेसिकली यही लाइनिंग्स उनके लिए है जहां पर प्रोटेक्शन में इसका कोई रोल नहीं है, ये सिंपल सिंगल लेयर है, भी रप्चर हो सकती है इजीली, इसलिए इसको प्रोटेक्शन वाले रोल्स पे नहीं डालते हैं. इनको डालते हैं एक्सचेंजेस कि भाई किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये बैरियर भी बने, yet it is very flexible for the passages of gases and nutrients and other excretory products. तो उस पर्पस से ये डिजाइन किया गया है. So it is composed of a single layer of cells. This type of epithelial tissue forms the lining of the blood vessels and the alveoli. Of exchange of gases है. Then this thin layer of cells facilitates exchange of substances. Cuboidal epithelium. You can see here the cuboidal, they are cube-like structures lining of the kidney tubules and ducts of salivary glands are composed of cuboidal epithelium. Cuboidal cells provides mechanical support. Cells of epithelium plays a major role in secretion. You can see, and then they are called glandular epithelium. तो अगर इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? Glandular epithelium. Especially when they start secreting. तो जितने भी glands हैं, endocrine, exocrine glands और heterocrine glands like pancreas, ये सभी modifications हैं epithelial tissues, right? Next. इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, so you can see here the basal surface is simple as apical surface is the squamous is like polygonal that looks like tiles. ठीक है, इसके मल्टीपल एजेस हैं और ये टाइटली फिट है, टाइल्स की तरह सिलेटेड, टी से स्टार्ट होता है, सिलेटेड. अगर आप खुद याद करना चाहते हैं अदरवाइज सिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं. So it looks like an arrangement of tiles, and यहाँ आप देख सकते हो classification based on number of cell layers. पहले हम इसकी बात करेंगे single. Cuboidal में it looks like a cube, and columnar are called pillar-like cells, right? So they are cuboidal or cube-like, and these are pillar-like. Okay, so like this we have the different shape-wise changes in them. Next we have this classification based on number of cell layers. So you can see here based on number of cell layers. Apical surface भी है, जो सबसे ऊपर वाला है apical और जो बेसमेंट को टच कर रहा है वो basal surface.
एपिकल सरफेस पे भी बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। अगर इसमें केराटिन आ गया, डेड सेल्स हैं, प्रोटीन केराटिन के फ्लेक्स वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं, तो रेप्टाइल्स वगैरह में आप देखेंगे जो टफ स्किन होती है, स्केल्स एंड स्क्यूट्स, वो इसी से बनता है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। Whereas अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन बींग्स की, तो हमारा स्किन नॉन केराटिनाइज्ड, वी हैव nails and hair as characterized, but we don't have the skin is हमारा skin है वो porous है, glandular. So this is how the modification happens as per the need. So classification based on number of cell layers. Note that basal cells regenerates. Basal cells regeneration होती है, top वाली जो है वो shed off होती है. So as apical cells stop off, they are replaced by basal cells. हमारी skin नवी न्यू स्किन आती है, रिमूव करने के बाद न्यू स्किन क्यों आती है, टॉप से जो है स्टैंडर्ड वगैरह वो रिमूव हो जाते हैं और नया बेसल से नया लेयर आता है. So this is about the classification based on the cell shapes. Next we have columnar epithelium, और इसके बारे में एक लाइन आप देख सकते हो. So this column-like and the single है तो ये भी diffusion, secretions, glandular दोनों है, इसमें modification देख सकते हैं. Stratified के cases में भी हम देख सकते हैं modification in many layers. Skin is an example of stratified epithelium. Best example है because with stratification ये layers आती है to prevent wear and tear. तो जितने भी genital and openings हैं, then the buccal cavities, so they also even they have stratified epithelium so that the wear and tear of food and then immune transfer process or the digestion process to the anal, so they have the protection, right? So that those particular localized regions are certified. Connective tissues के अगर हम बात करते हैं, then this is the next topic. लेकिन इससे पहले मैं आपको एक समरी करना चाहती हूँ ह्यूमन्स के में कि कहाँ पे कौन से सेल्स उनके प्रेजेंट होते हैं. इधर से टाइप्स हो गया, ये एक सिंपल एक मॉडल है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कैसे दिखता है. ये ऐसे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी और इसके ऊपर ऐसे नो स्पेस यू कैन सी इन बिटवीन देम. ये आपस में फिर कैसे एक्सचेंजेस करते हैं सब्सटेंसेस के, तो इनके पास सेल जंक्शंस होती हैं, जैसे कार्डियक मसल्स में भी हम देखते हैं स्पेशली सेल जंक्शंस. अदरवाइज सेल जंक्शन पर्टिकुलरली एपिथेलियल टिश्यू का ही वो होता है, यू कैन से फीचर. तो सेल जंक्शन से कम्युनिकेट करते हैं, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं. सो दिस इज द टॉप मोस्ट. अगर आप सुपर वाला देखें जिसमें ब्लड वेसल्स, lymph vessels and capillaries are unable to pierce this tissue, so blood circulation is absent. The free surface अगर आप देखते हैं, free surface of epithelial cells which faces either a body fluid or outside environment. इसके नीचे बेसमेंट के नीचे कनेक्टिव टिश्यू शुरू हो जाता है. It provides nourishment to these because they don't have a direct blood supply. Right? So this is about this and then we will talk about the कहाँ पे लोकेट प्रेजेंट है. आप देख सकते हो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम like iris, choroid, ciliary body of the eyes present होता है. Simple squamous lungs में present है, alveoli के अंदर present होता है. Flora of the lungs की जो covering होती है, pericardium जो हार्ट की कवरिंग है, ये सब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बने होते हैं. स्टमक के अंदर आप देख सकते हो. अच्छा, कॉलमनर सिंपल वाला लिवर में प्रेजेंट होता है. देन ब्रश बॉर्डर यानी माइक्रोविलाई के साथ पर्टिकुलरली ये मॉडिफिकेशन है जिसमें आउटग्रोथ्स है. देयर आर यू नो सेल सरफेस की आउटग्रोथ है प्रोजेक्टिंग आउटसाइड एंड दीज आर वेरी माइन्यूट एंड न्यूमरस इन नंबर, सो इट गिव्स अ ब्रश बॉर्डर टाइप अपीयरेंस. इसको कहते हैं सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विद द माइक्रोविलाई फॉर द इफेक्टिव एब्सॉर्प्शन. देन गॉल ब्लैडर लिवर में तो होता ही है. देन स्टमक में भी इट इज हैविंग गॉबलेट सेल्स एंड टॉल कॉलमनर सेल्स विद गॉबलेट. सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है. स्मॉल इंटेस्टाइन में विद माइक्रोविलाई होता है, with the microvilli because it has to increase the surface area for absorption of the nutrients that you study in class 10 in the life process, the foundations. So this is how we can help you out. Tissues की knowledge life तो मिल रही है, लेकिन ये सारे life process आप पढ़ते हैं class 10 में. So this is there. इसके बाद ovaries में fallopian tube में ciliated columnar होता है, so that the gamete egg जो है वो it is propelled further towards the ampulla अगर fertilization है, ठीक है, and also they push later in the zygote. Otherwise unfertilized eggs in the menstrual cycle will be going down towards the uterus.
after degeneration. So this is also Philippine tube में has ciliated columnar epithelium. So there are ciliated epithelium, columnar भी हो सकता है और cuboidal ciliated भी हो सकता है. So ciliated cuboidal कहाँ पे होगा? That is in the nephrons, in the kidney tubules, right? It is in the nephrons, in the kidney tubules. ठीक है? So then there is pseudo stratified. यानी होता क्या है कई बार columnar और cuboidal आपस में tall and small की अपनी जोड़ी से बन जाते हैं, एक बैच बन जाता है. That is pseudo stratified columnar. Ciliated भी है, cilia भी होता है, glandular goblet भी होता है, और mucus secretion ये particularly respiratory tract में पाया जाता है, right? So it is particularly for respiratory tract. So goblet cells is there, you can see here. Then it is in the ventricles of the brain. This you study in much higher classes. So ventricles यानी कि जो body brain के अंदर एक fluid flow कर रहा है for the nourishment, for exchange of material, giving back into the blood. So ये सब क्या कहते हैं cerebrospinal fluid. तो जितना भी brain में spinal cord में जो cavity create हुई है, ventricles कहते हैं उस cavity को. तो उस cavity के अंदर CSF flow कर रहा है, तो उसको कौन push कर रहा है उस fluid को? That is ciliated columnar epithelium. This is how we can see glands में जो glands के ducts होते हैं, जो minor ducts होते हैं, तो ये secretory ducts, जो secretory portion होता है वो cuboidal होता है, और जो convey करता है secretion को towards the target or towards the opening of the organ, या जो भी surface जिसपे fill right up, वो columnar होता है. So like this. So it is basically this type of appearance of the epithelium. Next, we talk about connective tissues. So connective tissues है, इसमें हम देख सकते हैं connective tissues के parts में भी. This is the cells of the connective tissues are loosely scattered in a matrix. They loosely scattered matrix में, and the matrix can be अच्छा इसकी तीन components. It should have a matrix, it should have a fiber, it should have cells. Right? So it is basically these things which are present, the cells of connective tissue based on the type of fiber, type of cells. Cells are diversity. It is the most abundant of that all the four types of tissues in the human body, and the matrix can be a fluid, jelly-like, dense or rigid. इसमें जो collagen protein होता है, collagen protein that is the most abundant protein of the animal world. वो कौन सा वो protein कहाँ पे present होता है? वो connective tissues में होता है. So the matrix can be a fluid, jelly-like, dense or rigid. The nature of the matrix depends on the function of the connective tissue and has a following various types. Like areolar or loose connective tissues के अगर हम बात करें, तो areolar tissues found between skin and muscles, around the blood vessels, nerves, and in bones, bone marrow. Areolar tissue fills the gaps between the tissues and provides tone. It's like a filler. कोई चीज आप बनाते हैं, Amazon से कुछ चीज ऑर्डर किया, वो अगर काफी फ्रेजाइल सा होगा तो उसमें क्या डालते हैं? पैकिंग मटेरियल डालते हैं, so that कुछ भी वेरिएंट है उसका नहीं हो, नुकसान ना हो, वो आसानी से आपको डिलीवर हो जाएगा विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन. एग्जैक्टली वही कुछ यहाँ पे की हुई है. So it also helps in repair of tissue. Repairing भी करता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे specialized cells होते हैं which are totipotent, which are actually pluripotent, because pluripotent means a tissue which has the ability to grow into a particular type of tissue. ठीक है, tissue linings के according, तो उस tissue के according जो organ बन सकता है, उसके cells precursor cells produce कर सकता है, उसको pluripotent कहते हैं in animal world. Right. Then is dense connective tissues, that is fibrous connective tissues. It has quite thicker because in lots of fiber is filled. So fiber filling और cell की filling की वजह से इसका matrix काफी fill हो गया है, इसलिए dense connective tissue है. इसमें भी regular irregular हो सकता है. मतलब suppose करो अगर हमने एक मॉडल बनाया कि ये दो है, इसमें ये dense है. अब इसमें मैंने फाइबर्स भी बना दिए हैं और फाइबर्स को मैंने पैरेलली अरेंज भी किया है, बीच में सेल्स भी अरेंज कर दिए हैं ऑल्टरनेट रो वाइज. ये काफी सिस्टमिक वाइज में अरेंज है. इसको हम बोलते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें टेंडन और लिगामेंट्स आते हैं. टेंडन लिगामेंट्स इसी के ही पार्ट्स होते हैं. इट इज टेंडन एंड लिगामेंट. वेयर एज अच्छा फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं. टेंडन जॉइंस बोन्स टू मसल्स
whereas so it is joining bones to muscles, whereas ligament is joining bones to bones. ठीक है, this is normal. Then irregular क्या होता है, फाइबर बहुत ही irregularly placed है इस तरह से, और यहाँ पर ये irregular है, this is irregular. ठीक है, irregular को बोलते हैं cord. Rather इसको sheath बोलते हैं. Cord is here. So this is the cord, sheath, right? So then this is how it is formed. Still, let me check. Let's try to be confirmed. Stratified जो आपको बताया दिया था, that is present in that case. Stratified epithelium, right? And what I've collected, cord and sheath. Cord and sheath is the pattern for. So the regular fiber and compact packed, irregular, and collagen fibers are both, fibroblasts and mast cells are both in this. So cord is the tendon connects bones with the muscles, and the sheath is the one which is for the coverings of the organs, like skin will them. Right. Ligament and sheath. Right. So cord is for the dense and sheath is for the irregular ones. ठीक है, तो इसको मैं बनाया था डेंस का एक होता है regular, एक irregular. The regular one is forming the cords, that is tendon and ligament, and sheath is for the covering, like Glissen's capsule है liver में, kidneys में है renal capsules. They are actually what? They are irregular, dense connective tissue packs. Then adipose tissues की अगर हम बात करते हैं, so adipose tissue is also modified but not modified, specialized. It is particularly having the adipose cells, adipocytes. So it is having the adipocytes. How they look like? Adipose पर बड़ा सा जो है fat globule होता है, is filled with the fat oil droplet, and the nucleus because of this and shifts towards the periphery. So it looks like a signet ring-like structure. एक single nerve वाला जो ring होती है, उसको उसके तरह लगता है, ठीक है? तो adipose tissues. So it is below the skin, beneath the organs for protection as well as to keep the body warm. ये as a heat insulator काम करता है, इससे हम heat loss नहीं feel करते and feel better. इसलिए winters में हम देखा कि हमारे diet में ज़्यादातर घी और ऐसे products होते हैं जिससे हमारा adipose tissue add होता है. We have a tendency to gain weight in winters because of the eating habits, but that's a necessary requirement because that helps us to protect from the heat loss. इससे हमारी body warmer रहती है, हमें ठंड नहीं. And similarly, this is there as adipose tissue की especially एक covering sheet होती है under the skin of the veins. So that in veins it is known as blubber. Adipose tissue has a lot of things. और एक होता है for energy reserve के point of view से hibernating animals में, और एक होता है as a protection from the heat loss. Okay, so in polar regions में भी हम देख सकते हैं, animals में होता है, camel में होता है, food storage, hump में होता है. So this is there. So adipose tissues की like location female body में भी है, beneath the skin is the most common, and allow some organs, soft delicate organs to protect it and cushioning it. So adipose tissue provides insulation and works as a cushion, protection. Next comes the specialized के अंदर हम देखते हैं skeletal connective tissue. Skeletal में दो categories आते हैं, bones and cartilages. Skeletal connective tissues के अगर हम बात करेंगे bones and cartilages में, तो यहाँ पर bone is mainly composed of, यहाँ पर bones और cartilage के अंदर जो matrix है, bones में mineralization आ जाती है, ठीक है? Mineralization.
due to which bone becomes what? It becomes, because it has the cells osteoblast, जो cell का एक है, वो है osteoblast. क्या बोलेंगे इसको हम? Osteoblast. ठीक है? And it looks very typical cell है ये. अगर हम एक single इसको देखें, इसकी इस तरह से projections है, cytoplasmic projections इस तरह से. तो ये एक single में आपको osteocyte बनाते हैं. This is one single osteocyte. This is बहुत सारे होते हैं और ये arrange होते हैं concentric manner, जिसे हम Haversian system बोलते हैं, जिसमें Haversian canal and lamellae बनते हैं. That's a very unique model. Haversian canal system जो होता है bone के अंदर, वो particularly characteristic है mammalian bones का. Mammals के bones का भी ये unique feature है. आपको apes और दूसरे vertebrates में ये model नहीं मिलता है. So bone makes a skeletal system. Skeletal system is responsible for providing structural framework, shape, support, movement, protection of soft, delicate organs. The brain protection is by cranium, the skull. Vertebral column is protecting the spinal cord. So this is the brain is. So ये होता है particularly for the bones. And इसके अंदर ये भी देखते हैं कि can see that diagram should be. So like this, connective tissues है. Connective tissues में बहुत कुछ है बताने के लिए, but वो हम 11th में introduce करते हैं combination में. तो whatever the base I'm telling you, that is also sufficient. So about the cartilage, I tell you about the bones part. This is the bone, like this is the round shaft bone and the terminal regions of the bones. And at the edges of the bone, there is the red bone marrow, which is the site for production of red cells or the formed elements. And then we have this particular thing. ये जो है पूरा, this is related to the long bone and it shows Haversian canals. ठीक है, compact bone के बारे में ये. इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो Haversian system कैसे दिखता है, round बीच में canal है और ये आप देख रहे लग रहा है जैसे वायर जैसे है नोड्स बने हुए. ये एक्चुअली बहुत सारे osteocytes concentric way में arranged है उसी को. So it is the hardest tissue of the body. And then comes the cartilage. Cartilage में blood supply नहीं है, इसीलिए meat transplant is successful. और perichondral इसकी membrane है, इसके जो cells होते हैं chondrocytes and they look like 8 and they are inside a fluid filled acumen. And their matrix is also made up of soft proteins and there is no mineralization in it. Proteins are there and no mineral deposit नहीं है, इसलिए इसमें hardness नहीं आती. It is permeable. ठीक है? So that is there. Cartilages are at various places, like you can see nose the tip, epiglottis, above the larynx, then ear pinna, then it is there in the coastal ribs, the rib cage, there are cartilages, and then at the edges of the long bones. So these are the sites where the cartilages are present. There are types like bony cartilage, they are very hard. They are present in those regions which are joints, you can say fibrous joints. For support. Calcified. So this is the diagram. You can see here at the corner, at the left corner. The collagen fibers are present around and then cartilage cells in the form of two cells in fluid filled acumen. This is about the cartilage. Cartilage provides support. Then blood. So in the blood, if you talk about the blood part, blood is a very specialized and quite elaborated type of the tissue. It is a liquid matrix. It has a liquid matrix. It is the only tissue which can flow. So blood plays an important role in transportation of various substances for defense mechanisms. We have disease here for oxygen and CO2 carrier because of RBCs, जिसके अंदर hemoglobin है, red color pigment. It also helps in osmoregulation and temperature control. So blood has lots of things. It's a very specialized class for the blood itself. So here we have the various types of, you can see the connective tissues. अभी हम blood के भी components को study करेंगे. So this is about that how in a it's a part of the knee, the thigh, and the lower region of the leg. It shows various types of connective tissues present. Blood is present. This is a organ तैयार हुआ, right? So it is.
You can have a look over this. Then comes the, अगर हम ब्लड की बात करें तो मैं आपको ब्लड का कॉम्पोनेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ. So like you can see here, the body, the blood has a connective tissue. Especially connective tissue is a fiber-free fluid matrix. It has two components. One is the plasma and one is the formed elements. Plasma, it has a matrix. Matrix है, that is fluid. It is straw colored because it doesn't have any pigment. इसमें RBC नहीं है, इस components separated है, इसका color pale है. 55% of the blood contribution है, 90 to 92% is पानी है. And others are proteins, minerals and nutrients. Nutrients transient phase में रहते हैं, मतलब movement कर रहे हैं. Glucose, amino acids, lipids depends to और कौन सा target भेजा जा रहा है. Protein 6 to 8% का contribution रखते हैं. Minerals बहुत कम amount में होते हैं. Mainly it is sodium, calcium, magnesium ions, bicarbonated chloride ions. Fibrinogen is the protein. There are 3 types of proteins needed for clotting. Fibrinogen is required जो clotting factor में है. Inactive form में रहते हैं. जब blood को clot हो रहा है, उसको matrix को gel बनना है, तब ये fiber बन जाता है. Mesh-like structure. Serum क्या होता है? Serum word सुनते हैं. Serum का है plasma minus clotting factor. तो plasma minus clotting factor का मतलब है serum clot नहीं कर सकता. Clotting process होने के बाद जो complete consumption हो जाता है clotting factor का, तो जो red color का fluid रह जाता है, now that is serum. Globulin primarily involved in defense mechanism, ये antibodies formation में help करते हैं. Albumin helps in osmotic balance. Body के water retention cell के बाहर अंदर कितना होना चाहिए? That is albumin का role play. Then comes the formed elements. Formed elements meaning the solid part of blood, that is erythrocytes, leukocytes, platelets. 45% of the blood is formed elements. So erythrocytes के RBCs, that is most abundant. It is having a value in a normal adult 5 to 5.5 millions per millimeter cube. It is enucleated, concave, it's a shape for the maximum addition of hemoglobin binding to it. इसके अंदर रहेगा, it is having a lifespan of 150 days approx. तो ये फिर degrade होने जाता है spleen के अंदर. Spleen में इसका further से कह सकते हैं dissection का इसका breakdown. और उसमें से जो recyclable part है, amino acids, protein part है, जो iron part है, वो use हो जाता है bone marrow से. And ताकि नए RBCs मिले. और जो remaining part है, ठीक है, जो heme group का जो remaining part है, वो होता है उसमें pigments में change करता है, bilirubin bilirubin जिसको excrete कर देते हैं biologists के through and digest भी होता है and excrete भी, जिसकी वजह से urine और feces का एक characteristic yellow color भी होता है. So then it is a red color iron pigment इसमें होता है. 12 to 16 grams hemoglobin per 100 ml of blood है. The average lifespan में discuss करेगा. Spleen को इसलिए graveyard of RBC भी बोला जाता है. Leukocytes, that is WBCs, white blood corpuscles. ध्यान रखिए आप, सेल नहीं बोलेंगे, corpuscles बोलेंगे. इसका जो origin है वो bone marrow है. Relatively it is less in number. Adults में इसका count 6 से 8,000 होता है per millimeter cube. Colorless है, इसमें कोई pigment नहीं है, nucleated है, lifespan leukocytes की बल्कि short होती है और two main categories में इसको divide करते हैं. Granules वाले होते हैं 3 तरह के, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, सबके अलग-अलग फंक्शंस हैं. और एक होता है ए ग्रैनुलेटेड मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. तो इसमें से चलो एक करके इनको देखते हैं. इओसिनोफिल्स के अगर हम बात करें ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर, तो एओफोन्स की तरह आपको कैसे ध्यान रखना है कि एओफोन्स की तरह इनके ये अपने न्यूक्लियस की वजह से बहुत फेमस है. इसमें से 2 लूप्स का न्यूक्लियस है, तो हम याद रख सकते हैं हेडफोन ईयर में लगाते हैं. So eosinophils, it is mainly for the resistance of infections and allergy होने पर ये eosinophils है जो increase होते हैं blood reports पे. मतलब क्वेश्चन आता है कि किसी को hay fever है, asthmatic attack है, तो कौन सा वाला WBC उस टाइम रिपोर्ट पर ब्लड में ज्यादा दिखेगा, तो वो है eosinophils के बारे में, right? Then यही नहीं, in fact अगर worms की भी infection है तो भी ये ज्यादा होते हैं. So infection risk factor, especially worms वाले infections. Basophils के बारे में बात करते हैं. इसमें 3 components release होते हैं, histamine, serotonin, heparin.
Heparin is a natural anticoagulant of the human body. ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता. Histamine और serotonin में फर्क क्या है? Histamine is basically a vasodilator, dilate करता है inflammatory responses के लिए, और serotonin is vasoconstrictor, ये blood pressure बढ़ाने करता है. जो कट लग गया तो serotonin से वहाँ पे vasoconstriction हो जाएगी ताकि blood loss कम हो जाए. Then neutrophils is more of phagocytic. It is the most abundant of all the three categories of granulocytes. सब तीनों में सबसे ज़्यादा neutrophils है, वो is phagocytic. एक granulated है, इसमें भी monocytes भी है, and you can see that. तो अच्छा, basophils के cases में यहाँ पर जैसे दो है, इसके बाद आपको ये sequence ऐसे लिखना तो तीन हो गए loops, और जो next वाला है वहाँ पर multi loop बना सकते हैं इस तरह से, right? यहाँ पर एक मोनोसाइट्स, इसकी eccentric न्यूक्लियस होती है, अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे गड्ढा सा आएगा, specific direction. This is eccentric nucleus, and then comes the lymphocytes. अगर हम lymphocytes की बात करें तो lymphocytes के केस में we can see here lymphocytes में भी इसके जो न्यूक्लियस होता है quite बड़ा सा होता है, well, लेकिन पूरा almost आप देख रहे हैं बाउंड्री के साथ काफी सारे इसमें डेंसिटी के प्रोबेडन देखता है. तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो मोनोसाइट्स इज phagocytic and lymphocytes is responsible for the immune responses. Then we have their platelets, the third factor, the third form element. It is a fragment, ये पूरा सेल है ही नहीं, इसका जो precursor mother cell है वो है megakaryocyte cells, and cell fragments है, their count is 1.5 to 3.5 lakhs per millimeter cube. इसका count किस बीमारी में कम हो जाता है? Dengue acid. Yes, this is dengue fever. So involved in coagulation, clotting में इसका बहुत बड़ा योगदान है, और reduction in the number causes clotting disorders, excessive loss of blood. This is about the blood part. Then we have another connective tissue which is lymph, which is also helping to transport substances. It acts as a middleman between the tissue and the cells. तो blood का ही filtrate होता है lymph, वो भी connective tissue का part है. इसके बाद अब अभी जो रह जाता है जो हमें डिस्कस करना कि दो टिश्यूज और होते हैं हमारे. So this we will be discussing in the next one, जो है उसमें मैं इसको कर रही हूँ muscular and neural.